Learning Fest 22-23, continuing the learning journey. We as educators ignite young minds, and in order to do that, we need to learn, unlearn and relearn. This Learning Fest 2.0 provided that opportunity. I wanted to see that what is it that new I'm going to learn this year. And as I came, I saw that GGIS had beautiful arrangements. लर्निंग फेस्ट में 28 से 29 अराउंड वर्कशॉप थे. The art of asking questions by Meenakshi ma'am. How to ask effective questions to make the learning more of engaging, student-centric and interactive, which can ignite the students' curiosity. तो सवाल तो हम बहुत करते हैं बच्चों से, अपने आप से, लेकिन उचित सवाल उचित समय पर कैसे करें और बच्चों को उसके लिए कैसे एनकरेज करें, प्रोत्साहित करें कि सही समय पर सही जवाब आना चाहिए, ये इस वर्कशॉप से समझने को मिला. कि हमें कोई भी टॉपिक शुरुआत करनी है, सो डायरेक्टली हमें बच्चों को ये टॉपिक बताना नहीं है. हमें उसके अकॉर्डिंग पहले उनके पूर्वज्ञान प्रश्नोत्तरी करनी है, और ज़्यादा से ये प्रश्न बच्चों को पता ही होते हैं. जैसे हम एक दो बताते हैं, बच्चे अपने आप पूछने लगते हैं कि मैम ऐसे भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग टॉपिक हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ के बच्चों को वो टॉपिक पर ले जा सकते हैं. So Lead the Change was something where touched me so deeply that it brought this enlightenment to me that each and every one of us have to do every little thing to bring this change wherever we are put in, whether it is the classroom or bus or wherever we are walking. Just we got to be proactively do that one initiative we have to take, so the little eyes or whichever eyes are looking us can also follow. In the student sensitization workshop, we got to learn how our unconscious behavior sometimes can leave long-lasting effects on students. STEM in classroom, so they showed a lot of experiments that were helpful for the younger kids, and yes, it was really interesting. TechX, my God, I was so happy with TechX this time. PV and Shweta ma'am really helped us learn the hex. डॉक्यूमेंट कैनवा पे कैसे वर्कशीट बना सकते हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिव आइडिया आ सकते हैं. द आर्ट ऑफ वर्कशीट मेकिंग, तो उसमें भी कितनी सारी टेक्निक्स है वर्कशीट्स बनाने की कि उनकी स्किल्स पता चले, रिसर्च कर सके वो. सो जिसमें बताया गया कि ब्लूम टैक्सोनॉमी यूज़ करके हम कैसे वर्कशीट क्रिएट करते हैं. So the Women's Health Matters by Dr. Neeti Bhatia was wonderful, which brought lot of awareness to me. I was even understanding that what are the things we women has to take care of, and all the safety measurements which we need to take as women, and what are the supplements you got to avoid and what are the supplements you got to take. So all these awareness I got it through this workshop, Women's Health Matters. मेकिंग लर्निंग विजिबल, हमेशा कैमरा मीन्स मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन कैसे क्लिक करना है, कब वो मोमेंट कैप्चर करना है वो समझे. And one more that I loved was the art session, because it was really relaxing. मुझे चित्र ड्राइंग करना, पेंटिंग करना मुझे बिल्कुल आता नहीं है, सो इसलिए मैंने ये वर्कशॉप अटेंड किया था. सो पहली बार मैंने कितने टाइम के बाद ब्रश हाथ में पकड़ के मैंने पेंटिंग किया, और जब भी हम ये एक्टिविटी कर रहे थे तब हम ये सारी परेशानी भूल जाते हैं, ऐसा ये सेशन था. प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस, स्टूडेंट सेंसिटाइजेशन, हेरिटेज वॉक, and then yoga, energizer. The day was full of many activities and it was amazing. One of my favorite workshops was the dance workshop by Dhwanil sir. I would have never thought doing a dance other than Garba, but Dhwanil sir managed to bring us out of our comfort zone, and he made us dance in front of the whole school. You guys were really amazing and your performance was really amazing. Believe me, to get once more from your students is something else. I also got the opportunity to host a workshop, the art of worksheet creation, where I got to learn a new skill, how to facilitate a workshop. So thank you GGIS for providing these opportunities.
So, as a new teacher here at GGIS, I discovered the purpose of me choosing to be a teacher through the workshops of Learning Fest 2.0. Along with teaching skills, teachers require many more skills, and those skills will help acing the teaching experience, and Learning Fest help us to do that. यहाँ लर्निंग फेस्ट से बहुत सारी जानकारी भी मिली और ये सारे वर्कशॉप्स जो थे वो सारे ज्ञानवर्धक थे। इस वर्कशॉप के साथ साथ हमारा टीचर बॉन्डिंग भी काफ़ी बढ़ा और टीचरों के साथ हमें टाइम स्पेंड करने को भी मिला। बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूड की गई थी। यह लर्निंग फेस्ट टीचर को सेंटर में रखकर बनाए गए थे सारे वर्कशॉप। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फेस्ट, मेरे पास एक ही शब्द है उसके लिए, अनुपम, अद्भुत। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नई स्पेशली मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती थी, लेकिन उसके बारे में मुझे और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली।